आज हमें प्रीवियस चैप्टर रे पढ़ले डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज हमें किछटा एडवांस कांसेप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखिबा, लाइक एंगल बिटवीन कर्व्स एंड टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, हायर डेरिवेटिव टेस्ट्स। एंड हमें एडवांस कांसेप्ट ऊपर किछटा एडवांस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा, किछटा हार्ड साइड रो क्वेश्चन मध्ये प्रैक्टिस करबा। लाइक द फर्स्ट थिंग इज हमें जेडी हमें देखिबा टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल सुनिले जनरली दिमाग को आसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट टेंजेंट एंड नॉर्मल दीज आर थिंग्स ऑफ डेरिवेटिव्स। केमिति सपोज हम पाखरे गोटे कर्व अछि, लाइक सपोज दिस इज ए कर्व। हमको ए पॉइंट रे दरकार टेंजेंट, हमको दरकार ए पॉइंट रे टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट होची एम्ति गोटे लाइन जेटा कि कर्व टाको गोटे पॉइंट रे टच करिकी, जस्ट टच करिकी आगो होय, मींस वन टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। माने जदी जदी मु ए कर्व टाको बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट रे डिवाइड करी, बहुत छोटे छोटे, तो जेउ पार्ट धर ए पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन हला, सेही पार्ट रो कॉरेस्पोंडिंग स्ट्रेट लाइन टाको मु जदी एक्सटेंड कर देबी तो सेटा हे जिवो तार टेंजेंट। सिमिलरली जेमति सर्कल रो टेंजेंट जस्ट वन पॉइंट रे टच कर। तो टेंजेंट केमति काढिबा? जदि मु ऑब्जर्व करिबी जे dy by dx कोन, एनी पॉइंट रे गोटे कर्व रो dy by dx मु केमति डिफाइन करि? dy by dx हला सेही पॉइंट रे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, लाइक हाउ द फंक्शन चेंजिंग, लाइक माने वन टाइप ऑफ ताको स्लोप ही गोटे लाइन रो जदि मु स्लोप कहबी कोन, लाइन रो स्लोप हला x एक्सिस सहित केते एंगल बनोची तार tan थीटा। जदि मु गोटे कर्व रो गोटे पॉइंट रे डेरिवेटिव कहबी, सपोज जदि मु गोटे कर्व अछि मो पाखरे सिंपल, मला एई पॉइंट रे कहबी डेरिवेटिव केते, एई पॉइंट रे डेरिवेटिव मापिया पय मु कोन करे? ऑब्वियसली जस्ट h डिस्टेंस तो को जाय की वैल्यू माइनस करके जो एंगल थीटा आसे तारे tan थीटा दिस बाय दिस f of x minus f of x minus h divided by h। तो एई लाइन टा को मु जदी एक्सटेंड करबी, एई लाइन टा को जदी मु h टेंड्स टू 0 करके एक्सटेंड करबी, तो एटा से टेंजेंट ही जिवो। और टेंजेंट कोन, टेंजेंट x संगे तो स्लोप सेम, ताने हमें टेंजेंट रो इक्वेशन आराम से पाई परिबा। केमिति? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की कर्व हमको जहां देथिबो, डेरिवेटिव फाइंड करबा एट गिवन पॉइंट। फर्स्ट हमें डिफरेंशिएट करबा dy by dx फाइंड करबा, देन गिवन पॉइंट रो हमें डेरिवेटिव। तापर हमें जे टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन कोन, y इक्वल टू mx plus c। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y दि अछि फॉर्म दा कोन सिंपल, जदि गोटे लाइन टी पास हो गोटे लाइन रो स्लोप होची m और पास करबो पॉइंट x पर, तामु लिखि परिबे ना लाइन टा होची y minus y1 is into m into x minus x1। मु जस्ट गोटे लाइन को ए भया लिख परिबे y minus y1 into m is equal to m into x minus x1। तो टेंजेंट पे मो पाखरे m मिल गला, m कोन सेही जगह रे dy by dx, x1 y1 मो पाखरे छी, तो मते टेंजेंट रो इक्वेशन मिल। तो एनी कर्व पई टेंजेंट रो इक्वेशन में आराम से एबे मो पाखर रहला नॉर्मल। नॉर्मल रे इक्वेशन केमति लिखिबा? नॉर्मल रे इक्वेशन लिखिया पई सिंपल मु जानि छी जे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। एक कर्व रे जदि मु एठी देखिबी तो कोन हला, ऑब्वियसली नॉर्मल होची सेही पॉइंट रे टेंजेंट रे परपेंडिकुलर। तापरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे हमें जस्ट जानिथिले जे दुईटा परपेंडिकुलर लाइन जदि अछि तार स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन, जदि गोटे रो स्लोप हला m1 आ गोटे रो स्लोप हला m2, तो दुईटा परपेंडिकुलर लाइन रो स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन होची -1। मो पाखरे टेंजेंट रो स्लोप अछि, तो मु नॉर्मल रो स्लोप आराम से फाइंड कर परिबी। नॉर्मल रो स्लोप फाइंड करला परे मु ऑब्वियसली नॉर्मल रो इक्वेशन भी काढी परिबी। तो दिस इज द थिंग। एग्जांपल हमें भी देखिबा, सिंपल एग्जांपल जदि मु कहबी हम पाखरे कर्व होची y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज आवर कर्व। अब मते कहिची x 1,1 पॉइंट रे टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करिया पे जदि कहला 1,1 पॉइंट रे मते फाइंड करे अछि टेंजेंट और मते फाइंड करे अछि नॉर्मल। तो मने देखिबी dy by dx कोन
dy by dx जदि मु देखिबी dy by dx सिंपल हे जिवो 2x 2x at 1 1 is 2 तो आउ ताने नॉर एटा हला टेंजेंट रो स्लोप दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लेट मु आपको कोची m1 यदि मु स्लोप ऑफ नॉर्मल मते दरकार m2 कोन करबी थीटा रे मल्टीप्लिकेशन हवा दरकार -1 तो ऑफ कोर्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2 टेंजेंट रो इक्वेशन केमते लिखिबी y -1 is equal to 2 into x minus 1 2 into x minus 1 एबे मु कोन करबी ना एबे करबी वेरीफाई कोन करबी I have to verify that it is a tangent or not केमती वेरीफाई करबी tangent आ गोटे कर्व आ ता tangent रो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली गोटे हिथिबो मात्र तो मु कोन करबी ना मु y जगह रे एटा पकेबी y जगह रे कोन आसीबी 2x minus 2 plus 1 is equal to x square आपको जदि मु सॉल्व करिवि आपको सॉल्व कला परे मु देखिबि जे मो पाखरे इक्वेशन आसीबो x minus 1 रो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 जाकी ओनली गोटे सॉल्यूशन तो वेरीफाइड दैट हमर टेंजेंट हमर ठीक काढी छे दिस आर नॉर्मल कैन हैव मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट विथ द कर्व tangent also can have multiple intersection but multiple intersection काहे कहूची सपोज मो कर्व टा हला एमिति दिस इज माय कर्व जो एई पॉइंट रो टेंजेंट थिबो सेटा आउ गोटे अलगा पॉइंट रे भी कट करि पारे बट टेंजेंट मु केते बार कहबी जदि सेई टाइप रो जस्ट जदि लाइन को मु सी डिस्टेंस से शिफ्ट करबी ठीक तो मते तीनटा इंटरसेक्शन पॉइंट मिले दुईटा गोटे एक्स्ट्रा टेंजेंट जो सॉल्यूशन थिबो सेटा ऑब्वियसली गोटे क्वाड्रेटिक स्क्वायर टर्म थिबो अदर x माइनस अल्फा स्क्वायर और x माइनस बीटा स्क्वायर एई टर्म ने टेंजेंट रे सॉल्व आसो तो हमको क्वेश्चन केमती पचारि पारे हम देखिबा गोटे दिटा क्वेश्चन टेंजेंट इक्वेशन लिखिबा नॉर्मल इक्वेशन लिखिबा ता छडा हमें आ मध्ये देख पारे जे मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन रे मध्ये यूज कर पारबा केबे केबे कहयो जे मैक्सिमा रे टेंजेंट मिनिमा रे टेंजेंट की टेंजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एमती हे पारे और टेंजेंट कर्व्स माने दुईटा कर्व गोटे पॉइंट रे टच करथुवे सेटा कैलकुलस रो भी माने क्वेश्चन एमिति तयारी बहुत हे पारे टेंजेंट एंड नॉर्मल नेक्स्ट हमें देखिबा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स व्हाट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन this is also just application of tangents and normal just application of tangents and normal केमिति suppose मोर दुईटी कर्व मो पाखरे अछि गोटे कर्व हला एमिति आ गोटे कर्व हला एमिति स्ट्रेट लाइन हे गला टिके कर्व करिया गोटे कर्व हला एमिति आ गोटे कर्व हला एमिति मो पाखरे दुईटा कर्व अछि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मु कहा कहबी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहबी जे जो पॉइंट रे से माने इंटरसेक्ट करछथि सेही पॉइंट रे मु बोथ कर्व रे टेंजेंट ड्रा करी सेही पॉइंट रे मु बोथ कर्व पे टेंजेंट ड्रा करिवि बोथ कर्व पे टेंजेंट ड्रा कला परे मते मिलबो दुईटा इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन तांको भितरे जो एंगल दुईटा स्ट्रेट लाइन मध्य रे जो एंगल टा थिबो थीटा एंड ऑब्वियसली दिस इज पाई माइनस थीटा जेटा भी छोटा होबो ऑब्वियसली सेटा कहि देबा एंगल 35 45 डिग्री दुईटा स्ट्रेट लाइन भितर एंगल 45 डिग्री कहबा जा दुईटा स्ट्रेट लाइन भितर एंगल 135 डिग्री कहया जाय तो ऑब्वियसली 90 डिग्री भितर कन्वेंशन हम रखचे जे हम एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री भितर कहबा तो जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट रे दुईटा टेंजेंट जदी मते मिल दिबो इंटरसेक्शन पॉइंट रे जो दुईटा टेंजेंट मिलबो ताकर दुईटा स्ट्रेट लाइन जो मिलला दुईटा टेंजेंट भितर एंगल और दुईटा नॉर्मल भितर एंगल भी ऑफ कोर्स सेम ही आसीबो कहीं नॉर्मल धर मो पाखरे टेंजेंट हैला या ते नॉर्मल कोन नॉर्मल भी ऑब्वियसली तारा 90 डिग्री एंगल तो मु देखिया गले ए एंगल और एंगल सेम आसीबो ऑब्वियसली तो नॉर्मल भितर एंगल टेंजेंट भितर एंगल दुईटा केमिति काढिबा सिंपल कांसेप्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिवा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केमिति फाइंड करिवा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट सॉल्व द इक्वेशन यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें गोटे क्वेश्चन ने देखिवा केमिति फाइंड करबा कैलकुलेट द स्लोप्स ऑब्वियसली दुईटा टेंजेंट रो स्लोप ऑब्वियसली dy by dx दुईटा कर्व पय कैलकुलेट करिवा बोथ कर्व पय जते हम dy by dx कैलकुलेट कर सारिबा
दीटा स्लोप आने पाइजो इंटरसेक्शन पॉइंट रे जदी तापरे जे हमें कोन पढी हमें स्ट्रेट लाइन रो नॉलेज जदी हमें यूज करबा जदी गोटे लाइन रो स्लोप हला m1 and other line ro slope hela m2 then we can just find the angle theta the acute angle 90 degree bhitar angle ta theta केमिति फाइंड करि परिबा tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1. This is nothing but if I can say tan theta 1 is equal to m1 मो पाखर जदि मु दीटा स्लोप को कहबी tan theta 1 is equal to m1 सेकंड टा को मु जदि कहबी tan theta 2 is equal to m2 tan theta 1 तो just I have to calculate tan mod of theta 1 minus theta 2 mod कहेंगी पॉजिटिव नेगेटिव जहां आसीबो तो mod of tan theta 1 minus theta 2 भी कहि देले चलबो कहीं एठी जदि mod तो tan theta 1 minus theta 2 रो फार्मूला कोन tan theta 1 minus theta 2 tan theta 1 मडी उल्टा कर देछि ऑब्वियसली चलबो mod अछि पे mod यूज करछि मॉड्यूलस काहे यूज करछि ना मते पॉजिटिव मिलला मु 0 टू 90 डिग्री उतना एंगल पाइ so this is tan theta 2 this is tan theta 1 divided by 1 plus tan theta 1 so हमको मिल जिवो दुईटा कर्व भितरे एंगल सिंपल एग्जांपल जदी मु देबी गोटे कर्व हला y इक्वल टू 1 आ गोटे कर्व हला x इक्वल टू 1 एई दीटा कर्व हला परपेंडिकुलर पय हमें कोन देखिबा परपेंडिकुलर जते हेबो थीटा 90 डिग्री माने that curves are called orthogonal curves these are called orthogonal curves का कहया जदि दुईटा कर्व परस्पर को 90 डिग्री एंगल रे कट करथिबे लाइक जदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे पड़थिबा इलिप्स एंड हाइपरबोला 90 डिग्री एंगल रे कट करंती बोधे कि दुईटा हाइपरबोला ए भया कोन उठी थिबो सिंपल केमिति जानिबा 90 डिग्री एंगल माने दिस टेंड्स टू इंफिनिटी इंफिनिटी तो हम देखि परिबानी जस्ट 90 डिग्री एंगल रे जदि कट करछि दुईटा कर माने ऑब्वियसली ता दुईटा स्ट्रेट लाइन जे ताको सम 1 plus m1 into m2 is equal to 0 माने जस्ट जेमति हम प्रीवियस थर यूज करथलो जने 90 डिग्री एंगल पय दुईटा रे स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन होवा दरकार -1 तो हमें एई कांसेप्ट टा को यूज करिबा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिया अपन डिफरेंट कर्व्स भितर नेक्स्ट हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखिले हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल देखिले एटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिस रे टिके क्वेश्चन उडा नेक्स्ट हमें देखिबा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत कम क्वेश्चन में यूज आसे बहुत कम क्वेश्चन मु जदी कहबी बहुत कम क्वेश्चन यूज आसे बट के टाइप रो क्वेश्चन यूज आसीबो सपोज मु हमको पढ़ाई छी x टू द पावर 7 रो किसी फंक्शन देतला किबा x टू द पावर 3 रो भी तो मैक्सिमम मिनिमम हमको जदी हमें कहि जे कोन हमें कहि जे f डबल डैश x रो साइन देखि हमें कहबा क्रिटिकल पॉइंट रे जदी f डबल डैश x लेस देन 0 हुए जदी लेस देन 0 हुए हमें कहले सेटा हला मिनिमा लेस देन 0 हला हमें कहले मिनिमा सॉरी ग्रेटर देन 0 रे हमें कहले मिनिमा जते ग्रेटर देन 0 हुए जते ग्रेटर देन 0 हुए सते हमें कहया मिनिमा जते लेस देन 0 हुए सते कहया हमें मैक्सिमा आ जते बे इक्वल टू 0 हुए हमें कहया हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करबा टेबल रखी छी एठी से टेबल टा केमिति हमें पढियो हमें देखिबा जस्ट ए टेबल फॉर only test this is only test for maxima and minima this table is only for test for extremum maxima and minima are called extremum test for extremum टेबल कोन कहूची फर्स्ट हमें जेंति काली पढिथिले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कोन फंक्शन a रे f dash ए 0 होतिबो f dash x changes sign from positive to negative माने प्रथमे बढ़िबो देन कमिबो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा ऑफ कोर्स हमें जानि छे मिनिमा पई कोन f dash a इक्वल टू 0 and f dash x changes from negative to positive एटा हम जानि छे दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कोन सिंपल f dash a 0 f double dash a less than 0 जेमति हम कहली सेटा मैक्सिमा f dash a 0 f double dash a greater than 0 that is called minima what is higher order derivative test कोन कहली
सत्य हमें देखियो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जदी हम छाडी देली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोन f a is equal to 0 f da, f f f dash a is equal to 0 f double dash equal to 0 and f dash x changes sign as x crosses a obviously f dash x to sign change होतिबो that is also a point of inflection but f dash x ऊपर मु केमती कहबी मो पाखरे जदी सपोज कर्व अछि x to the power 5 मु कहबी फर्स्ट डेरिवेटिव हला या सेकंड डेरिवेटिव हला या थर्ड डेरिवेटिव मु सिंपल केमिति कहि परिबी विदाउट साइन चेंज न देखि माने एपटे या अछि जे नेगेटिव रो पॉजिटिव जीवो पॉजिटिव रो नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भूल जी ओनली आई विल मु खाली डेरिवेटिव कैलकुलेट करमी ग्रेटर देन 0 हला जदी या लेस देन 0 केमिति कहबी तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप पाखरे रहिला गोटे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव केमिति यूज करबा बहुत बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट भलो कांसेप्ट गोटे केमिति f dash a is equal to 0 हेतिबो ऑफ कोर्स f double dash 0 हेतिबो f triple dash सपोज f n minus 1 n minus 1 थरो डेरिवेटिव पर्यंत 0 अछि म कहै छी n minus 1 पर्यंत 0 अछि आउ nth डेरिवेटिव ता लेस देन 0 अछि nth डेरिवेटिव ता लेस देन 0 अछि सपोज n कोनसी नेचुरल नंबर म कहबी nth डेरिवेटिव इज लेस देन 0 ता आगुरु सब गुडा डेरिवेटिव होची 0 ता आगुरु सब गुडा डेरिवेटिव 0 जदी n इवन हेतिबो म कोन कहमी जदी n इवन हेतिबो जदी n इवन हेतिबो then it is a point of maxima जदी n इवन हेतिबो it is a point of maxima और जदी n odd हेतिबो it is not extremum it is not extremum it is a point of inflection मु कोन कहली आउ जदी सिमिलरली जदी f nth ग्रेटर देन 0 हेतिबो आउ ताठू कम सब 0 हेतिबो आउ n हेतिबो इवन और n इवन जदी हेतिबो ताले ही मिनिमा हबो न हेले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिंपल जदी मु कहिबा के जेबी फंक्शन रो डेरिवेटिव जदी हमें 0 आसुची we will differentiate up to n times such that derivatives गोटे नॉन जीरो वैल्यू आसे n टाइम्स देखिली जदी डेरिवेटिव गोटे नॉन जीरो वैल्यू आसला जदी n हे गला ऑड जदी ऑड नंबर ऑफ टाइम रे आसुची डेरिवेटिव नॉन जीरो ताहले ऑब्वियसली मु कोन कहबी जदी ऑड नंबर ऑफ टाइम रे डेरिवेटिव नॉन जीरो आसीबो दैट इंप्लाइज सेटा गोटे एक्सट्रीमम पॉइंट नुहे 1 हेतिबो ऑब्वियसली n जदी 1 हला तो मु किछि कहि परिबिनी जदी n 1 रो बड हला 3 5 7 तो ऑब्वियसली दैट इज a point of inflection जदी n 3 5 7 0 आसला आ ताठू सब पछरे छोट दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट जदी n इवन हेतिबो तो ताहले मु साइन देखिबी जदी नेगेटिव हेतिबो ताहले मैक्सिमा जदी पॉजिटिव हेतिबो ताहले मिनिमा एग्जांपल सिंपल n इक्वल टू 2 रे मोर एठी आसुची n इक्वल टू 2 रे आसुची जदी लेस देन 0 और n इक्वल टू 1 पर्यंत 0 ताहले मु कहूची मैक्सिमा 2 होची इवन नंबर सिमिलरली एठी मते सिंपल से भया मुझे देखिए फंक्शन है x क्यूब 3x स्क्वायर 6x 6 फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव दिस इज एट x इक्वल टू 0 जदी मु देखिबी एट x इक्वल टू 0 जदी मु देखिबी दिस इज 0 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 सेकंड डेरिवेटिव 0 थर्ड डेरिवेटिव इज नॉन जीरो तो थर्ड 3 इज ऑड नंबर तो आई डजंट केयर मते किछि केयर कि 6 ऑड नंबर माने 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मु काली जेमति हमें सिंपल कर्व रे देखितले तो जेटा जदी मोर एटा x क्यूब रो कर्व ला हमें कर्व देखि कहितले जे दिस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एबे हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट रो मध्ये कहि परिबा जे दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सो दिस एटा हला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट रो पावर वी कैन आल्सो टेल इफ दिस इज means increase maxima minima or point of inflection this is the concept of maxima and minima using higher derivative concept of minima and maxima using higher derivative both important concept मन रखिवा बहुत important question मन रखिवा next
आमे देखिबा किछटा मोर प्रॉब्लम्स किछटा हायर डिफिकल्ट रे किछटा एडवांस डिफिकल्ट रे किछटा नुवा कांसेप्ट रे जहां हमें सिखले नुवा ना क्वेश्चन सारी हमें देखि फर्स्ट क्वेश्चन कर्व्स नॉर्मल टू ईच अदर मैं कहतिली कर्व्स नॉर्मल टू ईच अदर फर्स्ट क्वेश्चन this is an actual PYQ if the curves x equal to y to the power 4 and xy is equal to k cut at right angles then k रो वैल्यू हमको फाइंड करबे अछि तो 4k to the power 6 जस्ट क्वेश्चन टी बहुत सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन मोबाइल सीधा करो गोटे कर होला x इक्वल टू y टू द पावर 4 आ गोटे कर होला xy इज इक्वल टू k मते k गोटे जदी if anyone is watching then can you say x equal to y to the power 4 रो ग्राफ केमती हबो graph will only exist in first and fourth quadrant. Why? Y to the power 4 is always positive. So x cannot be negative. So x के second के बाद third quadrant पे जीरो नहीं. But this question time graph is not needed. I was just asking for purpose. तो केमिति solve करिवा एवा क्वेश्चन नो केमिति solve करिया हम पाखरे गोटे कर्व देछि x equal to y to the power 4 हम पाखरे आ गोटे कर्व देछि xy is equal to k तो फर्स्ट हमें फाइंड करिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केमिति फाइंड करिया just x suppose point of intersection is this मैं लिखि पारि जे x1 is equal to y1 to the power 4 x1 y1 is equal to k then मु just replace कर देली x1 को क्या कहा रे x1 को replace कर देली k upon y1 मो पाखरे सिंपलर इक्वेशन कोनटा আছে सिंपलर इक्वेशन एया मु एठी मध्ये x1 को सिंपल रिप्लेस कर परबी y1 to the power 4 रे या मु जे कोन्स पाटा रिप्लेस कले चलेबो तो सॉल्व करके मु कोन पाइली y1 is equal to k to the power 1 by 5 x1 is equal to k to the power 5 पूरा है कि y1 to the power 4 को इछि तो x1 is equal to k to the power 4 by 5 क्वेश्चन कहिछि दैट कटेड राइट एंगल्स माने कोन इंटरसेक्शन पॉइंट रे r स्लोप इनटू r स्लोप is equal to minus simple जल्दी मोबा xy is equal to k something like this x to the power of 4 something like this एमिति हे थाय किछि ओटे कर्व ता तो कहि जे एई जे टेंजेंट रहिला और एई जे टेंजेंट रहिला दुइटा टेंजेंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर माने दुइटा रे स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली माइनस तो फर्स्ट स्लोप रो फर्स्ट कर्व रो स्लोप dy by dx कोन तो मो एटी सिंपल जदी फंक्शन टा को एमिति भी लिख परबी ना कि y is equal to x to the power 1 by 4 मैं एमिति भी लिख परबी y is equal to x to the power 1 by 4 लिख परबी तो मो dy by dx कोन आसे 1 by 4 into x to the power minus 3 by 4 और मो सिंपल ला को एमिति भी डिफरेंशिएट कर परबी बोथ साइड रे डिफरेंशिएशन नेले 1 is equal to 4 1 is equal to 4y cube into dy by dx तो dy by dx में पाखरे कोन आसीबो 1 by 4y cube सिमिलरली आसीबो वैल्यू ऑब्वियसली तो जे बाटा ना डिफरेंशिएट करियो तो जदि माको डिफरेंशिएट करबी मो पाइबी 1 by 4 इक्वल दिस सिमिलरली मो सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करबी सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट कला परे मो पाइबी dy by dx is equal to minus k upon x square y1 equal to k upon x1 to minus k upon x square now either multiplication is equal to minus 1 so I will just multiply solve the equation I will get like this 4k to the power yeah तो मु पाइबी 4 to the power 5 k to the power 6 मते दरकार 4 to the power 6 k to the power 6 तो मु जस्ट बोथ साइड रे 4 मल्टीप्लाई करिबी I will get answer as 4 तो मोर आंसर इट इज 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन कर्व्स आर नॉर्मल टू इच जस्ट डिफरेंशिएट करके देखिवार अछि कोन वैल्यू आछि देन जस्ट मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू मैच वेरी सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नियरेस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पचला हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग along the curve given by y minus x to the power 3 by 2 is equal to 7 तो कर्व टाको मैं सिंपल एमिति भी लिख परबी y is equal to 7 plus x to the power 3 by 2 तापरे कोन कहला a soldier is positioned at the point 1 by 2 comma 7
wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, then the nearest distance is. तो मो पाखरे कर्व अछि y equal to x to the power 3/2 plus something ए टाइप रो कुछ गोटे कर्व अछि मो पाखरे गोटे पॉइंट अछि 1/2, 7 ए टाइप रो पॉइंट अछि मते फाइंड करे अछि बहुत गुडा पॉइंट अछि ए कर्व रो बहुत गुडा पॉइंट अछि एमती एमती केते पॉइंट अछि मते फाइंड करे अछि नियरेस्ट पॉइंट ई जो नियरेस्ट पॉइंट ता केते हो कॉन्सेप्ट कोन नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करिवार कॉन्सेप्ट कोन हमें देखिबा concept होची the point nearest to be the soldier will be the foot of normal on the curve from there कौन कहि गोटे कर्व अछि हम पाखरे सिंपल जदी हम कहबी गोटे कर्व अछि हम पाखरे केट कर्व बने जे कोन से गोटे कर्व अछि गोटे पॉइंट अछि मु कर्व रा डिफरेंट पॉइंट रे ड्रॉ करिवि नॉर्मल्स डिफरेंट पॉइंट्स रे ड्रॉ करिवि नॉर्मल्स और कर्व नॉर्मल ड्रॉ न करिकी मु कहबी मो पाखरे गोटे कर्व रहला ए पॉइंट अछि मो पाखरे मो पॉइंट रु कर्व को लाइन ड्रॉ करिवि लाइन काहे की ना कर्व रु नियरेस्ट पॉइंट पय जा ए लाइन रो डिस्टेंस जहार मिनिमम हेतिबो सेटा ऑब्वियसली द नियरेस्ट पॉइंट हो और जहार डिस्टेंस बेसी हेतिबो सेटा फारदेस्ट पॉइंट हो त नियरेस्ट पॉइंट पय ऑफ कोर्स मु कहि परिबी नियरेस्ट पॉइंट पय सपोज गोटे कर्व अछि मो पाखरे मु जदी गोटे पॉइंट रु एई भया डिफरेंट लाइन काढुची ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ଭ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ସ ସେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଡ୍ର କରୁଛି ତ ମିନିମମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇନ କେଉଁଟା ଆସିବ କେଉଁ ଲାଇନଟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁଠୁ ମିନିମମ ହବ ଅଫ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ଲାଇନଟି 90 डिग्री पैरेलल टू द पॉइंट जाउଥିବ तो नियरेस्ट पॉइंट जदी डिस्टेंस पचाला क्वेश्चन रे नियरेस्ट डिस्टेंस पॉइंट we just have to find a normal of the curve हमको जो कर्व देछि तार एमिति गोटे नॉर्मल फाइंड करिया पय पडिबो जेटा कि से पॉइंट देखि पास करथि मल्टीपल नॉर्मल पास कर पारे जदि मल्टीपल नॉर्मल पास करथिबो देन जेटार डिस्टेंस मिनिमम हिथिबो हमें सेटा नबा तो हमहु कोन करियार अछि गोटे कर्व अछि तो कर्व रे गोटे नॉर्मल इक्वेशन लिखियार अछि आ एमिति नॉर्मल फाइंड करे अछि जेटा कि एई पॉइंट थ्रू रे पास करथि तो कर्व रो नॉर्मल इक्वेशन लिखिबा हमको आस कर्व रो नॉर्मल इक्वेशन हमें केमते लिखिबा फर्स्ट हमें कैलकुलेट करिबा dy by dx मु कोन जानची y equal to 7 plus x to the power 3/2 dy by dx is very easy dy by dx कोन हबो ऑफ कोर्स 3/2 x to the power 1/2 x to the 1/2 को लिखली रूट x यदि टेंजेंट रो स्लोप हला एटा ताहले नॉर्मल रो स्लोप कोन हबो नॉर्मल रो स्लोप हबो -2/3 रूट x obviously -1 by this तो एबे मु लिखिबी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन केमते लिखिबी y minus 7 plus c to the power 3/2 एटा हला y1 at any point on the curve suppose point मु एठी नेछि c s plus 7 plus c to the power 3/2 एटा मो हला पॉइंट जनरल पॉइंट मु नेछि जदी x c हला y एमती y को भी c नै परिबे किंतु y को c नेले बहुत कष्ट हबो लिखिया पय तो दिस इज a -2 नॉर्मल रो स्लोप इनटू x to the power c तो मु कोन कोछि नॉर्मल देखि से पॉइंट पास करथि तो मु सही पॉइंट को नॉर्मल इक्वेशन रे पुट कर परिबे आराम से सही पॉइंट को मु नॉर्मल इक्वेशन रे पुट करले मो पाखरे वैल्यू कोन आसीबो जे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मु जदी सॉल्व करिवि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीबो -3c² - 2c + 1 जदी मु क्वाड्रेटिक इक्वेशन टा को सॉल्व करिवि मु पाइबि c = -1 और c = 1/3 but question रे given अछि x greater than equal to 0 x greater than equal to 0 question रे given अछि अब पॉइंट x नेछि c तो ऑफ कोर्स c होबो greater than equal to 0 is 1/3 तो c जदी 1/3 हैला तो मु पॉइंट पाइ गेली कोन 1/3 and this point is 7 plus 1/3 to the power 3/2 जहा भी 1/3 to the power 3/2 3√3 এই টাইপ रो बोधे कि छुडा हो हां तो एई पॉइंट रो डिस्टेंस मते फाइंड करे अछि आई कैन जस्ट यूज डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंड द आंसर तो कांसेप्ट हला नियरेस्ट पॉइंट ऑन ए कर्व पाई नियरेस्ट पॉइंट ऑन ए कर्व पाई मते
एमिति गोटे नॉर्मल फाइंड करियार अछि जेटा कि सही पॉइंट देखि पास करथिबो ताले जाय से पॉइंट रो डिस्टेंस सबु छोटो दिस इज आवर कांसेप्ट नेक्स्ट हमको किछटा सिंपल फंक्शन रो बिहेवियर जଣା अछि सेही टाइप रो बहुत सिंपल दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बट किछ टाइम रे क्वेश्चन भूल हवार चांस थे दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यू कैन डू दिस आल्सो आई विल आल्सो सॉल्व इट क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन कहूची लेट a be a real number ठीक अछि such that function fx is equal to ax square plus 6x minus 15 function fx is equal to ax square plus 6x minus 15 x belongs to real number of course काय में real function में काम करछे is increasing in this domain and decreasing in this domain increasing in this domain and decreasing then कहछि जे function gx is equal to ax square minus 6x plus 15 रे कोन हबो माने लोकल मैक्सिमम एट दिस लोकल मिनिमम तो जदि मु सिंपल कहबी a रो वैल्यू जदि मु फाइंड कर देले पाई gx ही पाई जेबी gx पाई गेले मु मैक्सिमम मिनिमम आराम से डेरिवेटिव टेस्ट करके फाइंड कर पाई तो a केमति कैलकुलेट कर क्वेश्चन देखि कि डायरेक्ट जणा पड़छि कोन जे fx इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन गोटे क्वाड्रेटिक फंक्शन केमति था quadratic function is either like this or like this आउ किछि तरीका न था क्वाड्रेटिक फंक्शन पे क्वाड्रेटिक फंक्शन either like this or this गोटे पार्ट रे से इंक्रीज करिवो गोटे पार्ट रे डिक्रीज करिवो and it will have a point of extremum either a minima or a गोटे पार्ट रे डिक्रीज करिवो according to our question it is increasing in minus infinity to 3 by 4 this is minus infinity it is increasing in minus infinity to 3 by 4 and decreasing in 3 by 4 to infinity so this is infinity मते पॉइंट कौन मिल गला पॉइंट मते मिल गला पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम इज 3 by 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम इज 3 by 4 तो मु केमिति कैलकुलेट करिवि जे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पाई कोन ताने f dash 3 by 4 is equal to 0 f dash 3 by 4 equal to 0 f dash x कोन f dash x में जदी कैलकुलेट करबे f dash x मो पाखरे आसुची 2ax plus 6 2ax plus 6 रो सॉल्यूशन होची 3 by 4 तो मु जदी x जगह रे 3 by 4 पुट करिबी मु पाई जेबी आराम से x रो वैल्यू मु कोन पाइबी x रो सॉरी a रो वैल्यू कोन पाइबी -4 कौन कांसेप्ट कौन हला एठी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज लाइक दिस गोटे पार्ट रे इंक्रीजिंग गोटे पार्ट रे डिक्रीजिंग तो ऑफ कोर्स मु ताको एक्सट्रीमम वैल्यू 3 by 4 तो मु a रो वैल्यू पाई गेले 3 -4 एबे मु जस्ट gx पाई गेली एबे gx रो मु देखि दे क्रिटिकल पॉइंट कोन gx g dash x को 0 तो मु x1 पाइली -3 by 4 এবং g double dash x में मु कैलकुलेट करी दिस इज डबल डेरिवेटिव टेस्ट आई एम अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट और जस्ट हायर डेरिवेटिव टेस्ट दिस इज हायर डेरिवेटिव टेस्ट higher derivative test is dt higher dt so g dash x is 0 and g double dash x is -8 is less than 0 so of course x1 is a point of local maximum so -3 by 4 is a point of it minimum koichi habani minimum koichi local maximum at x equal to -3 by 4 this is our answer बहुत simple question just you have to analyze what is asked in the question किछि बेसी याडू सियाडू भाबिया दरकार next this is another question of same maximum and minimum and in this question you have to apply first derivative test you have to apply first derivative test second derivative calculate करिबा बहुत कष्ट होई जिवो you have to apply first derivative test or something like because greatest integer function अछि जते greatest integer function रहिला ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ହେଇଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ maximum minimum ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି maximum minimum will exist or may exist at critical points
मो पाखरे जो फंक्शन रहे क्रिटिकल पॉइंट्स मते फाइंड करिया पे क्रिटिकल पॉइंट्स में केमती फाइंड करी पचाची sum of the maximum and minimum values of the function in this interval 5/4 ରୁ 2 ଭିତରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ କେମିତି फाइंड करिवा ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି x² + 2x ताको मैं लिखि परिबी x² + 2x + 1 x² + 2x + 1 - 1 this is equal to x + 1 रो होल स्क्वायर x² + 2x + 1 is equal to x + 1 रो होल स्क्वायर आ मु कोन कहली इंटीग्रल पार्ट भितरे जदी इंटीजर आसीबो त हमें ताको आराम से अलगा करि परिबा हमें ताको अलगा कर परिबा तो हमको कोन मिल गला हम fx होची 5x - 7 रो mod प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1 रो होल स्क्वायर -1 x स्क्वायर रो होल स्क्वायर -1 तो हम अबे देखिबे क्रिटिकल पॉइंट केमती फाइंड करली क्रिटिकल पॉइंट केमिति फाइंड कर मो पाखरे डोमेन कोन 5/4 to 2 domain is 5/4 to 2 first critical point obviously 5x - 7 रो mod अछि तो 5x - 7 अछि माने 7/5 of course 7/5 will be critical point then एमिति सबु पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हबो म कोन कहली एमिति सबु गुडा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हबो जहार की x + 1 रो स्क्वायर इंटीजर अछि तो कहली x + 1 रो स्क्वायर इंटीजर अछि x + 1 रो स्क्वायर इंटीजर आसीबो और वैल्यू टी 5/4 रो 2 भितरे अछि 5/4 रो 2 भितरे वैल्यू रहइबो ताठू बड़ हेइ परिबो केमिति करबी देखिवा वैल्यू 5/4 माने 1 रू बड़ तो x + 1 रो स्क्वायर इज इंटीजर तो x + 1 रो स्क्वायर कोन कोन हेइ पारे 1 हेइ पारे 2 हेइ पारे 3 हेइ पारे और किछि भी पारे जदि मु देखिबी x + 1 रो स्क्वायर 4 भी देखिबी तो 4 x + 1 रो स्क्वायर ना गोटे मिनिट बट कोन लिखली मु डोमेन टा इट लिखि रखछि डोमेन इज 5/2 सॉरी 5/4 2 this is x रो डोमेन तो x + 1 रो कोन हे जी x + 1 रो हे जीवो 9/4 to 3 9/4 is 2.25 तो मते सबु वैल्यू एमिति दरकार 2.25 रो बड़ 3 रो छोटो जेमिति की x + 1 रो वैल्यू एठी लाई करी x रो मते एमिति वैल्यू दरकार कि x + 1 रो वैल्यू एतिके लाई करी तो ऑफ कोर्स x + 1 = 3 हेले x2 हबो और x + 1 = एया हेले x + 1 = 2.25 हेले x 1.25 हबो बट मते दरकार x + 1 रो स्क्वायर इज इंटीजर x + 1 रो स्क्वायर गोटे मते जदी इंटीजर दरकार तो मु कोन पाइबी क्रिटिकल पॉइंट्स मु पाइबी गोटे √5 - 1 √4 - 1 काई हबनी √4 - 1 को 2 - 1 1 ही जीवो तो 1 x रो रेंज होची 5/4 तो 1 तो √5 - 1 √6 - 1 √7 - 1 √8 - 1 एमिति मु देखि तापरे maximum or minimum value of fx कोन केडी एग्जिस्ट करिवो either at critical point ना बाउंड्री पॉइंट एटा ही मु कहितली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू केडी एग्जिस्ट करिवो either बाउंड्री रे एग्जिस्ट कर पारे कि बाउंड्री टा मिनिमम और क्रिटिकल पॉइंट जेडी डेरिवेटिव रखो क्रिटिकल पॉइंट हमर आसे जेमति कि सपोज mod of x कहले x रो 0 these are critical points तो सेमति एग्जिस्ट करिवो तो मु गोटोटे जदी देखिबी बाउंड्री रे जदी मु देखिबी f of 5/4 मु देखिबी f of 5/4 is this 19/4 f of 5/4 कैलकुलेट करी देखिबा जदी 5/4 कैलकुलेट करी 4 this is 19/4 ठीक अछि तापरे मु देखिबी f of 7/5 7/5 कोन हो f of 7/5 7/5 रे हले एटा 0 हे जिवो एटा 7/5 माने 49/25 प्लस 14/5 49/25 प्लस 14/5
तो 119/25, तो 4.76 ର इंटीग्रल पार्ट हबो 4, तो 4.76 तो 4 तापर मु देखिबि जे 5x - 7 आर नेचर केमिति हिथिबो। ऑब्वियसली x = 7/5 रे एटा 0 हबो, एमिति थिबो किछि उटे ग्राफ ऑफ कोर्स काई मॉड्यूलस अछि, तो ग्राफ टा ऑफ कोर्स हेथिबो 7/5 रे 0 तापर एमिति हिथिबो। तो 7/5 परे एटा हो इंक्रीज। आ मु जदि आकु भी देखिबी x² + 2x, आर डेरिवेटिव कोन? आर डेरिवेटिव हैला 2x + 2, मोर डोमेन हैला x पॉजिटिव 5/4 ରୁ 2, तो आर डेरिवेटिव भी पॉजिटिव, माने एटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन, एटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऑब्वियसली फंक्शन 7/5 परे बढ़ी चलिबो, 7/5 परे फंक्शन ऑफ कोर्स बढ़ी चलिबो, 7/5 रो वैल्यू कबे कमिबो। तो मो मैक्सिमम वैल्यू केटी पाइबी? मैक्सिमम वैल्यू पाइबी 2 रे। 2 रे वैल्यू करते हबो 3 + 8 11, 2 रे वैल्यू मु पाइबी 11, आ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स क्रिटिकल पॉइंट रे केउंटी पाइबी 7/5 रे 4, तो मोर आंसर हे जिवो 4 + 11 = 15। तो ए क्वेश्चन में कौन देखले? We have to carefully calculate the critical points, critical points carefully calculate करियार अछि, तापरे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करला परे केयरफुली हमको जस्ट देखिबार अछि जे बाउंड्री रे इन्वेस्ट करबो केना क्रिटिकल पॉइंट्स, आ ऑफ कोर्स जे छोटे छोटे फंक्शन उडा हमर अछि, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग आफ्टर 7/5। These are our main observation, एई भय हमको ऑब्जर्वेशन करी कि क्वेश्चन सॉल्व करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट I will discuss this question. This is not easy, but this is an easy question. Fx is given as this, then which of the following is not? किछ नहीं, fx दे दिला x - 3 to the power n1, x - 5 to the power n2, देखि पचारला जे n1 n2 रो वैल्यू दे देला, देखि पचारला जे 3 5 भितरे लोकल मैक्सिमा हबो कि लोकल मिनिमा हम सही पाए। तो मु कोन करबी, मो पाखरे fx अछि, मो पाखरे fx अछि, आई विल जस्ट डिफरेंशिएट कर ले अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। मु कोन यूज करबी? प्रोडक्ट रूल। आई विल यूज प्रोडक्ट रूल टू डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट कला परे मु कोन देखिबी, f(x) = दिस, तो मो पाखरे डिफरेंशिएट है कि वैल्यू आस जिबा या x - 3 to the power n-1, x - 5 to the power n2 - 1, n2 into x - 3 plus 1। तो एबे हम चेक करिबा ऑप्शन वाइज ऑप्शन ए क्वेश्चन रे n1 = 3, n2 = 4, n1 = 3, n2 = 4, तो हम पाखरे f(x) कोन आसीबो? f(x) आसीबो x - 3 रो होल स्क्वायर into x - 5 रो होल क्यूब into 7x - 27। तो 3 रे तो f(x) 0 हबो, 5 रे भी 0 हबो, आउ केटी 0 हबो? x = 27/7। मु देखिबि जे 27/7 टा ऑफ कोर्स 3 और 5 भितर लाई करछि, तो अबे मते देखिबार अछि 27/7 टा कोन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना मिनिमा ना मैक्सिमा। तो मु एठी यूज करिबी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आई विल यूज फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काहे कि नै, ना सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिया बहुत कष्ट होई जिवो, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिया बहुत कष्ट। तो मु देखिबे जतबे x इज लेस देन 27/7, तो मु देखिबी एटा हबो नेगेटिव, जते x इज लेस देन 27/7 एटा नेगेटिव, एटा भी नेगेटिव, तो x इज लेस देन 27/7 ने एटा हबो पॉजिटिव, f(x) इज पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। और x इज ग्रेटर देन 27/7, जस्ट ग्रेटर देन 27/7, एटा हबो नेगेटिव किंतु एटा हबो पॉजिटिव, तो f(x) इज नेगेटिव, तो f(x) चेंज करछि पॉजिटिव रो नेगेटिव, माने दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, तो a इज ए लोकल मैक्सिमा, सो दिस इज ट्रू। तो एई भया मु आउ सब ऑप्शन चेक करी, एई भया सिंपल एई तरीका रे मु आउ सब ऑप्शन चेक करबी, चेक करी करी देखिया पर हम देखियो जे ऑप्शन सी रे
लोकल मिनिमा इज एटेड ऑप्शन सी रे हमको लोकल मिनिमा मिलेगा बट ऑप्शन रे कहछि लोकल मैक्सिमम दिस इज ए भूल ऑप्शन केमिति करबी सिंपल मु गोटे ऑप्शन केमिति चेक करबी डिस्कस करथि नेक्स्ट ऑप्शन आराम से चेक करि दिबो किछि नॉट सो डिफिकल्ट चेक करिवा जस्ट यू हैव टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डेरिवेटिव एमिति काढिवार अछि नुआ जेमिति सिंपल एटा आउट करली जेमिति n इक्वल टू 4 आउ 5 रे जा n इक्वल टू 4 आउ 3 रे मु जेमिति वैल्यू कैलकुलेट करिवि तो एमती देखिबि तो जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन रे साइन देखिबि तो लोकल मिनिमा कि लोकल मैक्सिमा जाना पड़े तो ई टाइप रे क्वेश्चन हम सॉल्व कर आई हैव टू मोर क्वेश्चंस दिस इज ए गुड क्वेश्चन मु कहथिले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पचार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निहाती पचारिबो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रे दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन the number of real root of e to the power 4 तो e to the power आसेला तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होची ऑब्जर्वेशन 1 होची दिस इज ए पॉलिनोमियल इन e to the power x एटा हला e to the power x रे पॉलिनोमियल दिस इज e to the power x रो to the power 4 e to the power x रो to the power 3 एई होया तो मु कोन करबी ना मु जस्ट e to the power x को रिप्लेस कर देबी t रे e to the power x को t रे रिप्लेस कर देबी e to the power x को आई कैन रिप्लेस बाय t देन मो पाखरे t रे गोटे पॉलिनोमियल इक्वेशन हे जीवो मते फाइंड करियर अछि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स पॉजिटिव काहे की ना e to the power x is always greater than 0 e to the power x graph केमती e to the power x graph is like this so e to the power x is always greater than 0 तो मते फाइंड करियर अछि number of positive real roots number of positive solutions of f of t is equal to t to the power 4 plus 2t cube minus t minus 6 is equal to 0 मते एटा फाइंड करियो केमती करिवा मो पाखरे अछि f of 0 equal to minus 6 अछि ने जस्ट 0 पुट करके देखि देबी कि f of 0 equal to minus 6 0 रु ऊपर ही मते सॉल्यूशन दरकार आई वांट सॉल्यूशंस t greater than 0 तो मो फंक्शन देखिबी f of 0 रे हला -6 एवं मु तापर देखि जे f of 2 greater than 0 हे होची f of 2 देखिले बहुत बड़ 16 plus something minus just 8 तो greater than 0 मु आठी देखि पारिबी जे जदि मु 2 किंबा 1 2 रु बड़ नंबर पकेबी तो t to the power 4 is obviously greater than t for any number greater than 2 t to the power 4 is greater than t plus 6 तो ये नंबर ता सब पॉजिटिव ही हो मु एमिति भी कहि पारिबी जे ऑल नंबर्स ग्रेटर देन गोटे c भाई मो पाखरे फंक्शन जदि मते सॉल्यूशन जदि फाइंड करे अछि t to the power 4 plus 2t cube t to the power 4 plus 2t cube is equal to t plus 6 मते या फाइंड करे अछि ना तो मु कोन कहितली हमको सब इक्वेशन हमको दुईटा ग्राफ रो इंटरसेक्शन भी हम देखि परबा मो पाखरे इक्वेशन कोन रहिला t to the power 4 plus 2t cube मु के खाली स्पेसिफाई इक्वेशन अछि t to the power 4 plus 2t cube is equal to t plus 6 मते r ग्राफ बने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉइंट देखि एटा हे गला हमर कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाइट पार्ट ता हला ऊपर ब्लैक पार्ट ता हला तो t plus 6 रो ग्राफ is just like this is t plus 6 t to the power 4 मते x इक्वल टू पॉजिटिव रे दरकार ना तो मैं नेगेटिव पाई काई स्पेस कर दिस इज पॉजिटिव t plus 6 रो ग्राफ सपोज दिस इज 6 एटा 6 है ना एटा हला 0 एटा हला 6 तो मैं ग्राफ चली मो t plus 6 रे नेक्स्ट मते दरकार t to the power 4 plus 2t cube केमती करबी 0 रे वैल्यू ऑफ कोर्स 0 डेरिवेटिव देखिबी 4t cube plus 6t square
डेरिवेटिव देखिए कौन जानली डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव टी जते ग्रेटर देन 0 डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव तो फंक्शन टा बॉडी बॉडी चली फंक्शन बॉडी बॉडी चली केतरा इंटरसेक्शन पॉइंट को पाइली इंटरसेक्शन पॉइंट को पाइली ओनली गुड पॉजिटिव नेगेटिव रे हमको देखि बार भी नहीं काई टी नेगेटिव हले e टू द पावर x के नेगेटिव ही परियो तो इंटरसेक्शन पॉइंट गुड तो नंबर ऑफ रियल रूट्स केते 1 दिस इज कॉल्ड द ग्राफ अप्रोच दिस इज द ग्राफ अप्रोच आई लव ग्राफ अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस मते ग्राफ अप्रोच बहुत भलो लागे कहीं ना तुम पाखरे गोटे बड़ इक्वेशन अछि दिस इज अ वेरी बिग इक्वेशन t to the power 4 plus 2t cube plus minus t minus 6 आर ग्राफ को बनै पाबी आर ग्राफ बनेबा टिके कष्ट हो किंतु मुझे देखो पार्ट पार्ट कर देबी नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ना आर ग्राफ बनेबा पॉजिटिव पई बहुत सहज t plus 6 तो बहुत सहज तो ए टाइप रे हम बड़ क्वेश्चन को बहुत छोट रे सॉल्व कर परिबा this is called graph approach easily draw two graphs then we can just do the solution otherwise यदि graph approach करिबा नहीं this is another approach application of derivative based approach this is also a good approach I am leaving the solution for you you can just see the solution and understand but I will prefer use graph approach to solve if you can use graph if you can you use the knowledge application of derivative ର knowledge को use करो graph बनेवा ପାଇଁ use graph if you can anywhere कोउठी भी जे कोसी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो सीक्वेंस एंड सीरीज भी हो बे बे दरकार पड़ी जाए इक्वेशन डिफरेंशियल जे कोसी थिंग पे एरिया हो जहां ग्राफ ड्रॉ करिवार अछि हम ग्राफ ड्रॉ करिवा सिखिवार अछि नेक्स्ट दिस इज a question tangent उपरे let S be a set of all natural numbers for which the line the equation मते कोन देला x by a plus y by b is equal to 2 कोन देला x by a plus y by b is equal to 2 is a tangent to the curve x by a to the power n y by b to the power n equal to 2 at the point a comma b a comma b point रे ए कर्व tangent जेते n पई हबो n माने এই जो n ର set माने n equal to 1 पाई हबो कि n equal to n पाई 1 पाई तो obviously tangent हबो काई straight line is coinciding with straight line that time n equal to 2 पाई n equal to 3 पाई the tangent हबो कि यदि tangent हबा हम सेट रे तो केमदी सॉल्व करियो बहुत सिंपल हमको डिफरेंशिएट करिवार अछि हमको कोन करिया अछि स्लोप हमको फाइंड करियार अछि dy by dx हमको फाइंड करियार अछि dy by dx dy by dx फाइंड करिबा एट एनी पॉइंट x, y लिखिबा dy by dx फाइंड करिबा टेंजेंट इक्वेशन लिखिबा टेंजेंट इक्वेशन हमें लिखला परे जस्ट वेरीफाई करिबा कि कोन वैल्यू टेंजेंट इक्वेशन n टर्म्स आसो टेंजेंट इक्वेशन रे n थिबो जस्ट वेरीफाई करिबा जे n रो कोन वैल्यू पाई ए टेंजेंट इक्वेशन और ए टेंजेंट इक्वेशन सेम सेम आसो तमे केमति देखिबा डिफरेंशिएट केमति करबा ऑब्वियसली n x टू द पावर n माइनस a into 1 by a 1 by a डिफरेंशिएट करबा समस्त मासे दिस इज n डिफरेंशिएट कला परे मु स्लोप पाइबी एई स्लोप पाइबी माइनस b by a xb by ya to the power n minus 1 तो मते टेंजेंट क्यों पॉइंट रे कहछि टेंजेंट कहछि एट द पॉइंट a b तो a b रे टेंजेंट माने x जगह रे a पकेबी एठी b पकेबी तो a by b a कटि जीवो b b कटि जीवो तो मु स्लोप पाइबी माइनस b by a मोर पॉइंट हैला a b slope is minus b by a मु लिखिबी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus b is equal to minus b by a into x minus a ठीक अछि एबे मु लिखिबी एमिति a y जस्ट
I can see also here. This is our equation. Y minus b is equal to minus b by a into x minus a. तो मु जस्ट केमिति लिख पारि मु लिखि पारिबि b को एठी नहीं आछि तो मु पारिबि y minus b by b. Y minus b by b is equal to minus x by a. तो y by b ता y by b रहिला minus b by b minus 1 is minus x by a minus x by a रहि जिवो minus a by a और एठी ओटा माइनस अछि प्लस 1 is जस्ट जदि मु x by a को एपडु ने आसमी tangent रे इक्वेशन मु पाई गली x by a plus y by b is equal to 2 dependency on n किछि रहिला नाही for any n जे कोसी n पाई स्लोप रो वैल्यू मु पाइली दिस तो एई स्लोप रे b by b a, b पॉइंट देखि tangent रे इक्वेशन कोन पाइबी x by a plus y by b is equal to 2 तो आंसर कोन हबो s equal to all natural s equal to all natural numbers समस्त natural number पाई मु tangent पाई जीबी x by a plus y by b is equal to 2 this is a simple question application of tangents this is a function this is an exercise for you a question level exercise for you can do this exercise काहेंगी a function में किछि यूज होनी you just have to assume a function fx is a polynomial of degree 3 such that एमिति जदि क्वेश्चन देला fx is a polynomial of degree 3 such that this f of 1 is equal to 5 f of 2 is equal to 6 f of 3 is equal to 7 f of 7 is equal to 8 एमिति जहां भी तो हमको एज्यूम करिवार अछि सिंपल fx is a polynomial of degree 3 है एज्यूम करिलवा हमें 8x³ bx square plus cx plus d is equal to 0 एटा को हमको एज्यूम करिवार अछि देन तापरे कोन हमको कोइ जी f of -1 is 10 f of 1 is -6 and f of x is a critical point at here f dash x is a critical point at here चारटा इंफॉर्मेशन हमको दे देला चारटा वेरिएबल कोन कहली मु इंफॉर्मेशन कोन कोन f of -1 कहिची f of 1 कहिची क्रिटिकल पॉइंट माने f dash -1 f dash -1 is 0 this is one information and f double dash 1 f dash extra critical point माने f double dash 1 is equal to 1 हमको मिलेबो सॉरी हमको मिलेबो four variable four equation sorry what is this हाँ four variable a b c d चारटा वेरिएबल we have four equation one equation is this one equation is this one equation is this one equation is this तो हमको पूरा fx मिल जिवो fx मिलला परे हम of course local minima find कर करियो this is exercise for you guys and you can see this is the question this is the solution how to do the solution and तापरे local minima derivative sign chain देखि के आराम से काढियो so practice this question this is exercise question I have given you all the hints केमिति कोन करिया अछि चारटा वेरिएबल चारटा इक्वेशन एटा ओटा प्रैक्टिस करिया अछि आउ नेक्स्ट थिंग इज एटा को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ओदे प्रैक्टिस करिया अछि this is finishing our derivative parts application of derivative finish होची application of derivative finish कला पर हमें देखिले कि जस्ट किछटा एडवांस कांसेप्ट हमें देखिले टेंजेंट नॉर्मल हायर डेरिवेटिव टेस्ट देन हमें किछटा क्वेश्चन सॉल्व कले एंड एई टाइप रो क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रे एग्जाम रे आसे आठो किछि कष्ट बेसी क्वेश्चन आसीबने तो जस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एई टाइप रो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चले एग्जाम रे क्वेश्चन इजी थैंक्स